Hello everyone. Today we are going to learn quicksort algorithm. This algorithm is based on the principle of divide and conquer. Also we can see one of the example which is asked in examination, that is sort the following number in ascending order by applying the quicksort. Why sorting is done on the data? There is several reasons. We are doing the sorting on the data because of efficient searching, data analysis, data visualization, data compression, data integrity, improving the performance, like sorting can improve the performance of various algorithms like searching, inserting, and deleting, and also for better data management. Let's see the algorithm of quicksort. So quicksort is a sorting algorithm based on the divide and conquer that picks an element as a pivot and partition the given array around the picked pivot by placing the pivot in its correct position. So quicksort works on the principle of divide and conquer, breaking down the problem into a subproblem. So there are many versions of quicksort that picks pivot in different way. Okay, we can select a pivot element as a first element. We can select a pivot element as a last element. We can select a random pivot element and apply this quicksort. Okay, pick a median as a pivot element. These all are the versions for the quicksort for selecting the pivot element. So in our case, we are going to consider the first element as a pivot element. Okay, let's see the example so that you can understand what is exactly a pivot. So in our example, we can select first element as a pivot. As I say, there is two pointer. It may be ij, it may be pq. Okay, p pointer moves on the right side until it gets greater value compared to pivot element. If it gets, then we are going to stop at that particular position. Okay, and q pointer moves on the left side until it gets lesser or equal value compared to pivot element. If we get that particular element, then we stop. The main agenda, or when we replacing, or when we swapping the elements, is if p and q not cross over, then swap p pointer value and q pointer value. Okay, p is going from left to right. Okay, q is coming from right to left. If both are crossover, then and only then we are going to swap pivot element with q pointer. Otherwise, we can swap p and q. Okay, this is somewhat difficult to understand. Let's understand with the help of example. Suppose the first element is a pivot element, that is 42. Okay, now what p pointer does, it will go to the right hand side until the greater value is encountered. Okay, 23 is greater than 42, no. 74 is greater than 42, yes. So p pointer will point here. It will stop searching on the right. Is that clear? Now q will searching for the lesser element compared to pivot element. Okay, so first q will check 87. 87 is less than 42, no. 99 is less than 42, no. 36 is less than 42. Okay, so q will stop here. Okay, now if p and q not cross over, then swap p pointer value and q pointer value. Okay, now what we have to do, we have to swap this 74 and 36. So instead of 36, 74 will be there, and instead of 74, 36 will be. Okay, now what is crossover? If while searching the lesser element than pivot element, if q will cross over this p or p will cross over the q, then we have to swap q pointer with a pivot pointer. What exactly then pivot is? Okay, when pivot is when pivot takes its position, then the left hand side, the elements on the left hand side are the lesser than the pivot, and the element
on the right hand side will be greater than the pivot. This will be better understand with the help of example. Let's see one of the example. Okay, let's see this example. Here we add a infinity sign. You can see at the last of the list, we are adding this infinity sign. Why we are adding this? Infinity is a maximum number, or we can say maximum integer. It acts like an end of a list, or we can say end marker. अगर p को हमें पता है p को हमें कहाँ कहाँ मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, सपोज सारे एलिमेंट 29 से छोटे हैं तो p को कहीं तो आके रुकना होगा ना. ओके, तो कहाँ पे आके रुक जाएगा? इन्फिनिटी साइन. अब आप बोलोगे सर तो फिर क्यू, सपोज सारे एलिमेंट्स बड़े हैं पिवोट से और ये राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है तो क्यू स्टॉप कहाँ होगा? तो क्यू कहाँ स्टॉप होगा? मैंने आपको प्रीवियस टाइप में बताया. आप यू कैन सी दैट if q gets minimum or less than or equal to pivot, minimum or equal to pivot, then it will stop. तो कहीं ना कहीं वो जब वो फाइंड आउट करके यहाँ पे आएगा तो उसे इक्वल टू पिवट मिल ही जाएगा, तो वहां पे आके स्टॉप हो जाएगा. क्लियर? ओके, let's solve this example. As we know that p will move from left to right. When it will be stopped? When it gets higher value compared to pivot. pivot से अगर उसे greater value मिला तो stop हो जाएगा. क्लियर है? तो p अगर मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो कहाँ के स्टॉप होगा? 15 is not greater than 29, 82 is greater than 29. p will halt here. ओके, सिमिलरली q क्या फाइंड आउट करेगा? पिवोट से लेसर वैल्यू कहाँ है, तो फर्स्ट ही एलिमेंट उसे लेसर मिल गया, दैट इज 8, तो q will be halt here. Okay, let's see the answer. That is this one. Okay, now p and q both are stopped. They are not crossover. If they are crossed, then we have to swap the value of q with the point pivot. ओके, अगर वो क्रॉस हो गए होते तभी हमें क्यू पॉइंटर का एलिमेंट जो है उसे हम पिवट के साथ स्वैप करते, बट अभी क्या हुआ? क्रॉस हुए नहीं. सो वी हैव टू स्वैप पी पॉइंटर वैल्यू एंड क्यू पॉइंटर वैल्यू. ओके, तो एट द प्लेस ऑफ 82 8 आ जाएगा, एट द प्लेस ऑफ 8 82 आ जाएगा. ओके, सो दिस विल बी द आंसर. ओके, नाउ p once again scans from left to right. Okay, searching for the higher value compared to pivot. 22 is not greater, 73 17 is not greater, 53 is greater than 29. P will be stopped here. Okay, what q will find? Q will find the lesser value compared to pivot. Okay, 4 is less than 29, so q will stop here. Once again, p and q both are not crossover. Okay, so we simply swap this 53 and 4. So what will be the answer? This one. 4 will be swapped here, 53 will be here. Okay. Okay. In previous slide, P will be pointing at 4, Q will be pointing at 53. You can check. Okay. When P will move from left to right and searching for the greater value compared to pivot, that is 29, P will be stopped at the 57. And Q is at 53. It will scan from right to left. Okay. So Q will be stopped here. Why? Because 4 is lesser than 29. Now, अब क्या हो रहा है? P and Q are crossover. That's why the value of q will be swapped with the pivot. Okay, so what is the answer? This one. Now you can see 29 will take its position. How? On the left hand side, all the elements are lesser than 29. On the right hand side, all the elements are greater than 29. Okay, now we have to divide. We have total 2 subarrays, that is this one left side, which contains 4, 15, 11, 8, 22 and 17. Second one is 57, 53, 82. Okay, and we have to apply same methods recursively in
this both sublist. Okay, same method अब हमें अप्लाई करना है, एक इस लिस्ट पे और सेकंड वन इज दिस वन. Okay, let's see how. Same, first element we are picking as a pivot element. P will be pointing here, Q will be pointing at infinity sign. Infinity add करना, yes add करना, because P को कहीं ना कहीं हमें राइट हैंड साइड पे जाके स्टॉप करना होगा, so that उसे हमें पता चले कि this is the end of the array और end of the list. ओके, नाउ P क्या करेगा फिर से 29 ने अपनी जगह ले लिया, अब हमें दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है. आप दोनों सब एरे को साथ में भी सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, नाउ P will move from left to right searching for the greater than 4. Here P will be stopped. Q will be searching from right to left which are lesser than pivot, which are lesser than pivot, lesser than or equal to pivot, huh? Here it will be stopped. P and Q both are crossover. Okay, P and Q both are crossover, so we have to replace pivot with Q. Okay, pivot वही place पे है तो हम किससे replace करें, तो 4 is also taking its position. Is that clear? तो 4 को भी अपना sorted ऐसा कह सकते हैं हम, sorted place मिल गया है, that is first element is 4. now यहाँ पे फिर से एक array आ रहा है, that is which contains 15 11 8 22 17. इसे हमें फिर से अलग से solve करना है. This is our new list. Okay, where 15 is our pivot element. Is that clear? जब जब क्रॉसओवर होंगे तब तब वो एलिमेंट हमें मिल जाएगा फिक्स्ड, जिसे हम क्यू और पिवट को हम स्वैप करेंगे. ओके, 15 इज अवर पिवट एलिमेंट. नाउ पी विल बी सर्चिंग फॉर द मैक्सिमम, मैक्सिमम सर्च करते करते आएगा तो पी कहाँ पे आके स्टॉप होगा, यहाँ पे. क्यू आर सर्चिंग लेसर देन 15, तो कहाँ पे आके स्टॉप होगा वो स्टॉप होगा आके, एक्चुअली क्यू विल बी हियर. ओके, क्यू कहाँ सर्च करते करते 8 पे आके. क्लियर, बोथ आर क्रॉस ओवर. The value of Q will be here, the value of pointer P will be here, both are crossed, so we have to swap 8 and 15. Why? Because P and Q are crossover, so Q की जो भी वैल्यू होगी उसे हम किससे रिप्लेस करेंगे, pivots. Okay, so what is the answer? This one. Now 15 also takes its position. मैंने पहले ही कहा था आपको, जब भी वो क्रॉसओवर होता है, जब भी हम Q और पिवट वैल्यू को हम स्वैप करेंगे, देन दैट पर्टिकुलर पिवट गेट्स इट्स पोजीशन. उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आप चेक करो तो लेसर एलिमेंट ही होंगे, राइट हैंड साइड पे चेक करो तो ग्रेटर एलिमेंट ही होंगे. यू कैन चेक हियर, 15 से यहाँ पे सारे के सारे लेसर है, यहाँ पे सारे के सारे ग्रेटर एलिमेंट्स. ओके, नाउ फिर से हमारे पास दो सब एरे आ गए, दैट इज 8 and 11. दिस वन, नेक्स्ट वन इज 22 and 17. We have to solve this both separately. Okay, taking first element as an pivot. P कहाँ जाएगा for searching a greater element from left to right. Yes, P will be stopped here. Q कहाँ जाएगा for searching lesser or equal to element compared to pivot. 11 is not lesser. Yes, 8 is not lesser but it is equal to pivot element. तो यहाँ पे आके Q stop हो जाएगा. So P and Q once again crossover. Okay, तो Q को हम pivot से ही replace करेंगे तो वो अपने जगह पे ही रहेगा. Okay, so 8 will takes its position. So what's the answer? This. Okay, now 11. अब एक ही एलिमेंट अगर रहता है लिस्ट में देन इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड. ओके, दैट इज आप इसे चेक भी कर सकते हो. पी को आप लेफ्ट टू राइट लेके जाओगे और क्यू को राइट टू लेफ्ट लेके आओगे तो क्रॉस ओवर हो जाएंगे और क्यू विल टेक इट्स पोजीशन, पिवट विल टेक इट्स पोजीशन. ओके, सिमिलरली we have to do for 22 and 17. We will move from left to right. उसे कौन सा एलिमेंट चाहिए, 22 से बड़ा. 22 से बड़ा क्या है, इन्फिनिटी है हमारे केस में यहाँ. ओके, तो इन्फिनिटी पे आके वो स्टॉप हो जाएगा. क्यू क्या चेक करेगा, लेसर देन 22, तो 17 पे आके स्टॉप कर देगा. क्लियर है, लाइक दिस. ओके, नाउ पी एंड क्यू आर क्रॉस ओवर, तो हमें क्या करना है, क्यू की वैल्यू को पिवोट से स्वैप कर देना है. सो व्हाट इज द आंसर, 17 and 22. इज दैट क्लियर? इट्स वेरी सिंपल एल्गोरिथम. नाउ this left portion is already scanned, 22 is remaining, sorry.
मैंने आपको पहले ही कहा अगर एक ही एलिमेंट है then it is already sorted. Okay, now we already sorted the left sub half. Okay, now we have to sort the right sub half when we get the first pivot element. Okay, so you can see here this is already sorted 4, 8, 11, 15, 17, 22, 29. Now we have to similar by applying similar method we have to sort this particular three elements. Okay, यहाँ पे भी हमने वही किया है 57 फर्स्ट एलिमेंट को एज अ पिवट एलिमेंट ले लिया. P क्या चेक करेगा 57 से कोई बड़ा एलिमेंट है क्या ऑन द राइट हैंड साइड. यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा P. यू कैन सी हियर स्टॉप हो गया. Q क्या चेक करेगा 57 से कोई लेसर एलिमेंट है क्या. यस 53 से लेसर एलिमेंट है, दैट इज दिस वन 53. तो P एंड Q हियर यू कैन सी P एंड Q आर क्रॉस ओवर. क्रॉस होता है तो हमें क्या करना है Q की जो भी वैल्यू है उसे पिवट से चेंज स्वैप कर देना. So this is the answer 53, 57, 82. Okay. Now हमें फिर से इसे डिवाइड करना होगा in two sub list. First one is 53 and second one is 82. मैंने आपको आगे भी कहा अगर एक ही एलिमेंट आता है तो that is already sorted. Okay. So we get the answer that is 4, 8, 11, 15, 17, 22, 29, 53, 57 and 82. This is how you have to write in the examination. Okay. Just go through it. So these are the questions which are asked in GTO exam from the sorting part, that is unit number 5. It may be insertion sort, it may be quick sort, it may be merge sort, it may be bubble sort, but quick sort is frequently asked. That is why this topic is important. Solve one of the example from this paper. If you have any doubt or any query, please contact me.